Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will study about the transformer model of an induction motor. As we have studied that induction motor is actually a transformer whose secondary is rotating. In an induction motor, when the voltage is applied to the stator winding, a voltage is induced in the rotor windings of the machine. In general, the greater the relative motion between the rotor and the stator magnetic fields, the greater is the induced EMF and the greater is the resulting voltage frequency. So, the largest relative motion occurs when the rotor is stationary. And when the rotor is stationary, so that condition of rotor is called the blocked rotor condition. So at the blocked rotor condition, in this case the slip is 1 because the rotor speed is 0 and the percent slip is equal to 100%, and the slip is 1. The smallest voltage and the frequency occurs when the slip is 0, when the rotor of the induction motor rotates at synchronous speed. So in this case the slip is 0 and the induced voltage in the rotor will be 0 and the frequency of the rotor voltage will be 0. So now look at this diagram. This is actually the uh, equivalent model of an induction motor. यहाँ पे आप देखिए, चूँकि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडक्शन मोटर एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर ही है जिसका सेकेंडरी रोटेटिंग है। तो जो मॉडल हमने ट्रांसफार्मर का बनाया था वही मॉडल जो है वो मॉडल हम इंडक्शन मोटर के लिए ड्रा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, इसके सेकेंडरी में चेंजेस आएंगे। प्राइमरी तो बिल्कुल सेम वही होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होता है वो स्टेशनरी होता है, उसके ऊपर 3 फेज़ वाइंडिंग होती है और वो 3 फेज़ वाइंडिंग जो है इसी तरह इंडक्शन का जो स्टेटर होता है उसके ऊपर 3 फेज़ वाइंडिंग होती है और वो भी स्टेशनरी होती है। तो जो लॉसेस आपके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में होती है वही लॉसेस जो है वो आपके इंडक्शन मोटर के स्टेटर में भी होगी। तो ये आप यूँ कह लें कि ये इंडक्शन मोटर के स्टेटर का सर्किट है। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये अब इसके रोटर का ये ट्रांसफार्मर का अगर आप देखें तो सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट था जो हमने चैप्टर 2 में इसको देखा था। यहाँ पे ये आपके पास रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल है जबकि इंडक्शन मोटर का आउटपुट जो है वो मैकेनिकल है। और दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ जो इंडक्शन मोटर है इसका जो सेकेंडरी है वो रोटेटिंग है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रांसफार्मर से। अच्छा, यहाँ पे आप देखें दिस इज़ R1. सो R1 इज़ एक्चुअली द स्टेटर रेजिस्टर, दिस JX1 इज़ द स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस। जिस तरह हमने ट्रांसफार्मर के केस में देखा था कि सारा का सारा जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ फ्लक्स जो है वो एयर गैप के थ्रू अपना पाथ जो है वो कंप्लीट कर रहा था। तो इसी तरह ये आपके स्टेटर के केस में दिस इज़ अ स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस. This RC and JXM actually this is the excitation branch, and it is modeled by the resistance RC, which corresponds to the hysteresis and core losses in parallel with the XM, which is actually the magnetization current loss. Okay. Now in case of transformer, this was referred as turn ratio. But in case of induction motor, it is basically the ratio of the conductor per phase on the stator
to the conductor per phase on the rotor. Now here this voltage ER is the induced voltage in the rotor of the induction motor, and this E1 is the three-phase supply voltage, and this ER is the it is produced in the rotor of the rotor. It is induced in the rotor of the induction motor. Similarly, JXR is the leakage reactance of the rotor, and RR is the internal resistance of the rotor winding. जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि इसका जो रोटर है वो इसका जो इंडक्शन मोटर का जो सेकेंडरी है वो रोटेटिंग है। तो इस केस में आपके पास ER जो है, दिस ER विल बी मैक्सिमम व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी। सो जब आपके पास रोटर और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, ये जितना ज़्यादा होगा इतना आपका ER जो है ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर के केस में आपका जो ER था वो डिपेंड कर रहा था टर्न रेशो पे, कि जितना आपके पास टर्न रेशो ज़्यादा होगा, यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि ये इंड्यूस्ड वोल्टेज ज़्यादा होता था। ठीक है। और आप लोगों ने ये भी देखा था कि इनपुट का, यानी प्राइमरी पे जो आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे थे और सेकेंडरी पे आप जो ले रहे थे, तो उन दोनों की फ्रिक्वेंसी जो थी वो सेम थी। लेकिन यहाँ पे ER जो है इट इज़ सब्जेक्टेड टू स्लिप, और ये डिपेंड करता है स्लिप के ऊपर। इस तरह आपके पास जो इस ER की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी डिपेंड कर रहा है आपके स्लिप के ऊपर। लेट्स सपोज आपका रोटर जो है अगर वो ब्लॉक्ड है, ये नहीं, रोटर ब्लॉक का क्या मतलब है कि आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा। तो हमें पता है कि स्लिप जो है, स्लिप इज़ एक्चुअली दिस इज़ इनसिंक्रोनस माइनस स्पीड ऑफ रोटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ सिंक्रोनस। सो अगर आपका रोटर जो है वो स्टेशनरी है तो रोटर का स्पीड 0 होगा, दिस इज़ ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन। तो आपका स्लिप जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो ER है वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो आपके ER नॉट के बराबर होगा। व्हाट इज़ ER नॉट? ER नॉट इज़ द induced voltage when rotor is stationary। ठीक है। तो ER नॉट के बराबर होगा। जब आपके पास जो रोटर है, अगर रोटर आपके पास सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है जिस स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, तो इस केस में आपका जो ER है वो क्या होगा, वो 0 होगा। इस केस में आपकी स्टेटर की इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी और रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होगी, वो बराबर होगी। इस केस में आपके पास रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में आपके पास स्लिप जो है 0 है। तो जनरली हम जो है लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज एट एनी स्लिप विल बी, नाउ ये दो कंडीशन, दो एक्सट्रीम केसेस है। पहला केस है आपका रोटर जो है वो स्टेशनरी है, तो उस केस में आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। दूसरा जो केस है जब आपका रोटर जो है वो सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है जिस स्पीड से आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट कर रहा है। तो दीज आर टू एक्सट्रीम केसेस। नाउ द मैग्नीट्यूड of the induced voltage
at any slip is what? ER is equal to S ER naught, where ER naught is the induced EMF when the rotor is blocked condition, when the rotor is in blocked condition, when the rotor is stationary. Similarly, the rotor frequency will be equal to the slip time the stator electrical frequency. सो आपका जो ई आर है ये डिपेंड करता है आपके स्लिप के ऊपर। इस तरह जो आपका रोटर का जो रिएक्टेंस है अगेन ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, और चूँकि फ्रिक्वेंसी स्लिप पे डिपेंड कर रहा है तो इस तरह आपका ये जो रिएक्टेंस है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये भी स्लिप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके पास इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो एग्जैक्टली ट्रांसफार्मर मॉडल के सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट और आउटपुट की यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की जो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी थी वो सेम थी, ठीक है। और वहाँ पे ये रिएक्टेंसेस जो थे वो सेम फ्रिक्वेंसी के लिए कांस्टेंट होते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन स्लिप, ई आर डिपेंड्स अपॉन स्लिप, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज होगी, ठीक है। आगे इसको इन्होंने कैसे रिपर टू स्टेटर साइड या रिपर टू रोटर साइड किया है ये आप खुद देख लें, सच इसमें इतना मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है, ठीक है। In this topic we will discuss about the losses and the power flow diagram. यहाँ पे actually we know that an induction motor can be basically described as a rotating transformer. Input of both transformer and inductor motors are the three-phase AC voltages and currents. But in case of transformer, the output is also a three-phase voltage or current, which is step up or step down. But in case of induction motor, the output is actually mechanical output and not it is not electrical output. So the relation of input electrical power and the output mechanical power is shown in this diagram. That how electrical power is converted, how the input electrical power is converted to the output mechanical power. The input power to an induction motor is in the form of three-phase voltages and current which are provided to the stator winding. As the stator winding is made of copper, so the stator winding have I square R losses. So first of all, the first loss occur is the stator copper loss. Uh, because when we apply three-phase voltage to the stator, so current will be flowing in the stator winding, and as the stator is wound with copper wire, so the stator will have copper losses, that is I square R losses. Now when this current is flowing in the stator winding which is provided to the stator winding, so as the stator winding is made of copper, so the first loss occur is I square R loss on the stator winding. Now the applied voltage causes a flow of current which causes a rotating magnetic field. So whenever there is a magnetic field, so there will be core losses, okay. So some amount of power is lost as core losses mean hysteresis plus eddy current losses. As we have discussed this, hysteresis plus eddy current losses are combinedly referred as core losses. Now the power remaining at this point, this is transferred through air gap to the rotor side. Now the power, the remaining power, the input power minus the stator copper losses minus the core losses. So the remaining power is
Now it is transferred to the rotor of the machine across the air gap between the stator and the rotor. So this power is called the air gap power. So this is the air gap power. Uh, After the power is transferred to the rotor, some of it is lost as I square R losses because the rotor may be a cage rotor, or it may be a phase wound rotor. So in both cases, in phase wound rotor, the winding is made of copper conductors. So there will also have I square R losses. In cage rotor, the bars are also made of copper, so there may also be I square R losses. Uh, Now, after I square R losses, that is also called rotor copper losses. The rotor starts rotates, and some of the power is lost as friction and windage losses, and uh, some is termed as stray losses, that is also called miscellaneous losses, because when the rotor rotates, it will create some sound, some vibration, some heat energy. Uh, so all those losses which do not fall in any of these categories, these are termed as stray losses. And normally stray losses 5 to 10% of the total losses. So this is how the input power is converted into output power, or the electrical power is how converted into mechanical power. यानी जब आप इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देंगे तो ये लॉसेस जो है उस होने के बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं. So now let's discuss example 6-1 and 6-1. We are given that we have 208 volt 10 horsepower, which is 4 pole 60 hertz, and the stator is wired as a Y connector stator. This induction motor has a full load slip of 5%. So we have to find the synchronous speed of this motor. We have to find the rotor speed of this motor at the rated load, and in third part we have to find the rotor frequency of this motor at the rated load. In the next part we have to find about the shaft torque, that how much electrical power is converted into mechanical power. So we know that the synchronous speed is actually 120 times the stator electrical frequency divided by number of poles. So 120, and as we know that the stator is energized with three-phase voltage having frequency 60 hertz. So and the stator is wound for 4 poles. So by putting stator electrical frequency is 60 hertz, and by placing P is equal to 4 and simplifying, we will get 1800 rpm. Now in part B we are asked to about the rotor speed of the motor. We know that the rotor speed of the motor is 1 minus slip into synchronous speed. So what is the slip is 5%, so 1 minus 5% we can write it as 0.05, and the synchronous speed we have calculated as 1800 rpm. So computing this we will get 1710 rpm. So now in part C we are asked to find the rotor frequency of this motor. We know that the rotor frequency is actually the slip time the stator electrical frequency. The slip is given as 0.05, 5% can be written as 0.05, and the stator is energized with three-phase supply which frequency is 60 hertz. So multiplying 0.05 with 60 hertz we will get 3 hertz. So it's mean that the EMF induced in the rotor induction motor will have a frequency of 3 hertz. So this is a alternate method for finding the
frequency of the rotor induced EMF. In part D, we are asked to calculate about the output torque or load torque. So we know that torque load is actually the output power divided by the omega m, where omega m is the rotor frequency in radians per second, while we have find that the rotor rpm, revolutions per minute. Now we have to convert revolutions per minute into radians per second. So we know that in one revolution there are 2 pi radians. So one revolution per minute is equal to 2 pi radians per minute. Okay, so 1710 revolutions per minute is actually equal to 1710 revolution into 2 pi radians per 60 seconds. So this is how we can calculate revolutions per minute into radians per second. This is actually how we are going to convert revolutions per minute into radians per second. We know that one revolution have 2 pi radians. 1710 revolution will have 1710 times 2 pi radian. The 1710 revolutions per minute is actually equal to 1710 times 2 pi radians per minute. So 1710 2 pi radians divided by 60 seconds. So this is how we are going to convert the revolutions per minute into radians per second. So after we know that the output power is given as 10 horsepower. So this is how to convert horsepower into kilowatt. We know that 1 horsepower is actually equal to 0.746 kilowatt. So 10 horsepower is actually equal to 7.46 kilowatt. So this is how we calculate the load torque P out divided by omega m. This comes out to be 41.7 Newton meter. So this is enough for today's lecture. Okay, Allah Hafiz.